Hello everyone, welcome to your YouTube channel English for All by Shekhar Kharat. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं IBPS क्लर्क 2023, IBPS क्लर्क 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को देखेंगे. So without wasting any further time, let's dive into the video. So ये जो वीडियो है ये मैं आपको दो पार्ट्स में लेके आऊंगा. पार्ट वन में मैं 15 क्वेश्चंस कवर करूंगा और पार्ट सेकंड में रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड. सो ये जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में आई विल बी डीलिंग विथ द 15 क्वेश्चंस और आई विल बी डीलिंग विथ एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल्स. मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल को छोड़ के मैं बाकी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आज सॉल्व करके थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा. ठीक है. सो चलो शुरू करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5. नाउ सी, एग्जाम में आप जब भी सॉल्व करते हो तो डायरेक्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि डायरेक्शन पढ़ते नहीं है एंड देन दे अज्यूम समथिंग एंड देन दे राइट इट और गिव द आंसर्स. और क्वेश्चन के आंसर्स पता होने के बावजूद भी या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स करके आते हैं. अब डायरेक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी हमें पूछा जाता है कि तो इनकरेक्ट क्या है ये देखो, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये देखो. तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि एरर डिटेक्शन में बस एरर फाइंड आउट करने की आदत हो जाती है एंड वहां पर क्वेश्चन के डायरेक्शन में होता है कि एरर फाइंड आउट करके हमें ये बताना है कि कौन से इसमें एरर नहीं है या एरर है. तो ये सब बहुत, तो डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लेट्स लुक इनटू दिस. सो डायरेक्शंस क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए. इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, four words are given in bold. Four words are given in bold. These four words may or may not be in their correct position. ठीक है. The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Okay, fine. Now find the correct combination of the words that replace each other. हमें correct combination को find out करना है. Okay, fine. Fine. चलो जी, ठीक. If the sentence is correct as it is, then select option E as your choice. Okay, fine. So this is nothing but this is called as word swap. इस टॉपिक को कहा जाता है वर्ड स्वैप. चलो जी, तो देखते हैं. 5 क्वेश्चन 2023 में आए थे ऑन वर्ड स्वैपिंग. चलो देखते हैं. A large house of wire will be needed to run the cable line from one end of the spool to the other. A large house of wire. House of wire नहीं होता, it is spool of wire. Spool क्या होता है? Spool is a cylindrical device. एक cylindrical device होता है जिसके ऊपर हम कोई चीज रोल करते हैं, रोल करके रखते हैं. ठीक है ना. It can be wire, it can be a rope. So spool is basically the device that is used to roll something over it. So we need not house of wire, we need spool of wire. We need spool of wire. So a large spool of wire will be needed to run the cable. Okay, to run the cable line from one end of the. अब यहाँ पर spool नहीं, यहाँ पर हमें spool की जगह चाहिए house. One end of the house to the other. So what we are swapping A with D. Do we have an option like that? A with D? Yes, we do have. Okay, so the correct answer for question number one will be A. So a large spool of wire will be needed to run the cable line from one end of the house to the other. So A and D will be swapped. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number second. The GST Council needs to meet more often and turn its to-do list into a must-do list expeditiously. Okay. So the bold words मैंने यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है. ठीक है ना. So the GST Council needs. ओके, ये सही लग रहा है. द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन, मतलब उन्होंने मीटिंग ज्यादा करनी चाहिए. टू मीट ये भी सही है. मोर ऑफन, बार बार मिलना चाहिए. एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट. एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट मतलब चेंज करना है. टू डू लिस्ट इज समथिंग, अ लिस्ट दैट इज, वी कैन से टू डू लिस्ट इज अ ब्रॉडर लिस्ट ऑफ थिंग्स.
a broader list of things, and must do list जो है, ठीक है ना, must do list जो है, this is what we can say, a more specific, we can say a specific more specific list of essential tasks or essential tasks, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल्ड जो, अब ये तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें बोल्ड स्वैप करना है कि नहीं। तो द जीएसटी काउंसिल नीड्स, ये सही है, टू मीट, ये भी सही है, मोर ऑफन, ये भी सही है, एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। So the correct answer for the question number 2 will be no interchange required. Let's move to the next question. A grand procession streets through the rolled of the festive city. Okay. A grand procession. Now procession है, procession के लिए we need an adjective. यहाँ पर grand use हुआ है, यहाँ पर grand ये adjective का use हुआ है. So this is correct. So A is correct. So grand procession streets through the road. नहीं नहीं, यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर it is misplaced. तो ग्रैंड प्रोसेशन मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोसेशन रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, ऐसा होना चाहिए। रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स मतलब वो रास्तों से चल चल गया, मतलब इट वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स और इट वेंट ऑन द स्ट्रीट्स, समथिंग लाइक दैट। सो स्ट्रीट्स जो है यहाँ पर मिसप्लेस्ड है, दिस इज मिसप्लेस्ड, एंड रोल्ड इज ऑल्सो मिसप्लेस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर स्वैप होना चाहिए था। सो ग्रैंड प्रोसेशन रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, roll through the streets of the festive city. बाकी का तो सही है। So A and D are correct. We just need to swap B with C. Option है option B. So correct answer will be option B. Question number 4. As the boy walked into his favorite teacher's classroom, he realized that it was a class to have his best friend in the same perk with him. Okay. Now यहाँ पर we need to do the swapping. As the boy walked As the boy walked into his favorite teacher's classroom, he realized, अब यहाँ तक तो सही है, as the boy walked, ये सही है, as the boy walked, अपने फेवरेट टीचर के क्लासरूम में जैसे ही वो आया, उसने रियलाइज किया कि इट वाज अ क्लास नहीं, इट वाज अ पर्क। सो इट वाज क्लास की जगह पर आएगा पर्क। इट वाज अ पर्क। पर्क का मतलब क्या होता है? पर्क का मतलब होता है एडवांटेज और बेनिफिट। पर्क का मतलब होता है बेनिफिट और we can say advantage. In this context, it means benefit or advantage. So it was a perk to have his best friend in the same classroom or in the same class, in the same class with him. So we need to swap C with D. Do we have an option like this? Yes, we do have. Correct answer is option D. Question number 5. Unraveling the fishing line wrapped tightly around the spool, the fisherman prepared to cast his pole. ओके, अनरेवलिंग द फिशिंग लाइन रैप टाइटली अराउंड द स्पूल। अब वापस से स्पूल आया है। स्पूल का मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके अराउंड, जिसके ऊपर हम कुछ रोल करते हैं। सो अनरेवलिंग द फिशिंग लाइन रैप टाइटली अराउंड द स्पूल, द फिशरमैन प्रिपेयर्ड टू कास्ट हिज पोल। अनरेवलिंग सही है। फिशिंग लाइन मतलब वही रस्सी की तरह होगा जो कि टाइटली रैप्ड है अराउंड द स्पूल। Fisherman prepared to cast his pole. All of them are correct. Correct answer is E for England. No interchange required. Let's go to the next question. Now we have another direction over here. Let's go for the direction first. Now each of the following questions, now this is the only one question we have. So each of the following questions give a sentence which has been divided, okay, into 4 parts. Fair enough. Which might not be in their correct order of narrative. The sentence is then followed by 5 options, one of which gives the sequence of the rearranged parts, okay, sequence of rearranged parts, to make the sentence meaningful.
You must choose the option which gives the correct sequence of the parts. If the sentence is already arranged in the correct sequence or the correct sequence doesn't match with any of the given sequence, mark option E, that is no arrangement required, as your answer. Okay. So basically this is nothing but sentence rearrangement इसको कहा जाता है. Parajumbles का छोटा भाई, we can say. So this topic is nothing but sentence rearrangement. Fine. अब देखते हैं. The leaves plants release the moved from the roots to once water is excess liquid in the form of vapor. Okay. So the leaves plants release the. अब release मतलब कुछ तो छोड़ना है. तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो release करना पड़ेगा. So release what? So the leaves plants release the excess liquid. जो excess liquid है उसको vapor के रूप में उसको release करता है. So we have got A and D as the pair. Do we have anything over here? Yes, we do have AD over here. Let's check it whether this is correct. So let's see. Excess liquid. No, the leaves plants release the excess liquid in the form of vapor. Chalo, moved from the roots to once. Chalo, theek hai. So we got the start of the sentence. Once water is moved from the roots. ठीक है ना? Once water is moved from the roots to the leaves, plants release the excess liquid in the form of vapor. So we have CBAD. ठीक है ना? CBAD. So this becomes our first one. This is our second one. ठीक है ना? Then we have A as the third part and fourth one is D. So CBAD. Once water is moved from the roots to the leaves, plants release the excess liquid in the form of vapor. चलो तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन बी. वेरी इजी सेंटेंस रीअरेंजमेंट. चलो आगे बढ़ते हैं. पैराजंबल थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. इफ यू वांट मी टू कवर पैराजंबल्स इन सेपरेट वीडियोस, जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. कमेंट करके मुझे बता देना. आई विल हैव अ डिटेल्ड सीरीज ऑफ पैराजंबल्स आल्सो. चलो क्वेश्चन नंबर 7 to 11. In each question, a part is omitted, which is then replaced by a blank. Okay. Choose the word from the given options that will fit into the blank most appropriately. Fine. तो हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें sentence completion. This is called as sentence completion. Sentence completion. ठीक है. Or we can say as fillers also, but sentence completion is better word for this topic. I was going out when the telephone. Okay. I was going out when the telephone was ringing. Okay. I was going out when the telephone was ringing, rang, ringing. Option D is rings, had ring, had rung, had rang. So this option is in itself wrong. Okay. So I was going out when the telephone was ringing. I was going out when the telephone was ringing is not correct. Now this is past continuous tense. I was going out. So जब मैं बाहर जा रहा था, I was going out when the telephone was ringing will not be the correct answer because we use uh, past continuous tense when two things are happening simultaneously or when two things were happening simultaneously in the past. तो यहाँ पर दोनों चीजें simultaneously नहीं हो रही थी, तो दोनों चीजों को हम past continuous में नहीं लिख सकते, तो option A is wrong. I was going out when the telephone rang. Okay, चलो. I was going out when the telephone ringing. अब when the telephone ringing ये तो गलत हो रहा है because we need, अगर हमें ing में लगाना है कोई verb तो we need to have a helping verb also with it. So यहाँ पर कोई helping verb नहीं है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग हो गया. दिस इज नॉट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पर आपको रिंग का रिंग्स हो जाएगा. ठीक है ना? एंड हैड रैंग, the tense is not into past perfect, so no need to use perfect tense over here. So the correct only option that remains with us is option B. So I was going out when the telephone rang.
and the telephone rang. अब यहां पर हमने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों किया है? वी हैव यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस ओवर हियर बिकॉज अब यहां पर क्या हो रहा है, दो इवेंट्स है, ठीक है ना, यहां पर दो इवेंट्स है, एक जाने वाला और एक फोन रिंग करने का, या फोन रिंग करने का, यस. So whenever one thing is happening, whenever one thing is happening in the middle of something, ठीक है ना, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब ऐसे समझ लेना कि दो चीजें हो रही है पास्ट में और एक चीज इज इन प्रोसेस, और उस प्रोसेस में के बीच में कोई अगर दूसरी चीज होती है तो वो दूसरी चीज हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. हेंस आई वॉज गोइंग आउट वॉज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में के बीचों बीच टेलीफोन की घंटी बज गई. Hence, second event or the second event is expressed in simple past, and the first one is expressed in past continuous. So, correct answer for question number 7 is B for Bombay. Let's move to the next question. She used to dash after him wherever he went. She used to following. Now we need a full infinitive over here. ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर full infinitive की जरूरत है to के बाद वाला. She used to फॉलोइंग तो आएगा नहीं, वी डोंट नीड एन आईएनजी. शी यूज्ड टू फॉलो थ्रू इज एन इनकरेक्ट phrasal verb over here, not used in this context, so this is also wrong. Follow up, she used to follow up after him wherever here. Follow up is like asking again or taking information or taking, yeah, information. So follow up is wrong. She used to followed. Now followed is again wrong because we need full infinitive. अब फुल इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है? फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन. फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम वी वन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई इट एज वी वन, बट एक्चुअल इंग्लिश में इट इज कॉल्ड एज बेस फॉर्म. So वहां पर बेस फॉर्म एक ही है, दैट इज ऑप्शन डी. सो शी यूज्ड टू फॉलो आफ्टर हिम wherever he went. So correct answer for question number 8 is D for Delhi. Chalo ji. Question number 9. The artist's unique style and creative vision dash a sense of wonder and awe among viewers. So the artist's unique style and creative vision evoked, suppressed, restricted, defied, weakened. अब देखना, the artist's unique style and creative vision के वजह से एक सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग व्यूअर्स के बीच में आया है. तो यहां पर वी नीड, यहां पर एक ब्लैंक में वी नीड अ पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड. सप्रेस जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में. सप्रेस मतलब किसी चीज को दबाना. रिस्ट्रिक्ट मतलब अगेन नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, किसी चीज को लिमिट करना. डिफाई अगेन इज किसी चीज को मना करना, किसी चीज को चैलेंज करना, अगेन अ वर्ड इन नेगेटिव कॉनोटेशन. वीकेंड मतलब किसी चीज को वीक करना, कमजोर करना, अगेन अ वर्ड इन नेगेटिव कॉनोटेशन. तो देर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज इवोक्ड. So the artist's unique style and creative vision evoked a sense of wonder. मतलब ignited, created, developed a sense of wonder and awe among viewers. So question number 9, correct answer is A for Ahmedabad. Question number 10, the musician's soulful performance and heartfelt lyrics dash a deep emotional connection with the audience. Okay. So the musician's soulful performance and heartfelt lyrics dash a deep emotional connection with the audience. Fine, fair enough. So the musician's soulful performance और अच्छे lyrics की वजह से एक emotional connection जुड़ गया between the audience and the musician. तो यहाँ पर अब हमें चाहिए, what do we need over here is the musician's soulful performance and heartfelt lyrics. ओके. डैश मतलब क्या होगा कि इससे एक चीज बन चुकी है, मतलब अगर ये पूरे कॉन्टेक्स्ट, पूरे क्वेश्चन का अगर कॉन्टेक्स्ट देखे
तो एक चीज को डेवलप किया, एक बनाया गया है, सो वी नीड समथिंग अगेन इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. So the musician's soulful performance and heartfelt lyrics dash a deep okay severed नहीं, forged okay हो सकता है, ramify बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं, ramify is wrong, disrupted again is wrong, disrupted again is wrong, disenchanted is again also wrong. अब severed का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कट करना, ठीक है ना, कट करना या कट ऑफ, या फिर वी कैन से सेपरेट करना, ठीक है ना. रैमिफाई का मतलब क्या होता है कि स्प्लिट करना, ठीक है ना, रैमिफाई का मतलब होता है स्प्लिट करना. डिसरप्ट करना मतलब इंटरप्ट करना. एंड डिसएन्चांटेड का मतलब होता है एंथुजियाज्म को कम करना, या लूज इंटरेस्ट, वी कैन से लूज इंटरेस्ट इन समथिंग, ठीक है ना. तो ऑल ऑफ देम आर इन नेगेटिव कॉनोटेशन, ठीक है ना. यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, फोर्ज्ड. फोर्ज्ड का मतलब क्या होता है, फोर्ज्ड का मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएट और वी कैन से डेवलप समथिंग, क्रिएट और डेवलप समथिंग. तो यहाँ पर ऑप्शन होगा द म्यूजिशियन सोलफुल परफॉर्मेंस एंड हार्टफेल्ट लिरिक्स फोर्ज्ड ए डीप इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, ठीक है. चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. The sudden economic downturn dashed a wave of uncertainty among investors and business owners. So the sudden economic downturn dashed a wave of uncertainty. और इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से एक वेव, अनसर्टेनिटी की वेव आई है अमॉन्ग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ओनर्स. तो इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है कम करना, कम करना, रिड्यूस, वी कैन से रिड्यूस. फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग करना या प्रोटेक्ट करना. डिप्लीटेड का मतलब होता है अगेन कम करना, रिड्यूस, वी कैन से. फोस्टर्ड, फोस्टर्ड का मतलब वी कैन से इट फोस्टर्ड, इट क्रिएटेड, वी कैन से इट, वी कैन से इट इज, इट वाज क्रिएटेड, ठीक है. सो वी हैव इग्नाइटेड, ओके, फोस्टर्ड का मतलब भी हो सकता है प्रमोट करना, वी कैन से प्रमोट. एंड इग्नाइटेड का मतलब हो सकता है टू ट्रिगर, इस कॉन्टेक्स्ट में इट कैन बी सेड ट्रिगर. इग्नाइट करना मतलब ट्रिगर करना या फिर स्पार्क करना, वी कैन से. सो आई थिंक, सो द सडन, सो इफ यू गो बाय द एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन बी जा रहा है, ऑप्शन सी जा रहा है, ऑप्शन डी भी हट रहा है. So we are left with A and D. So the sudden economic downturn ignited a wave of uncertainty or fostered, promoted or triggered. Promoted नहीं होएगा यहाँ पर, even if it is in the positive, मतलब सही मतलब connotation wise तो सही आ रहा है, लेकिन it is not appropriate. Correct answer will be ignited because it triggered, it created a spark of wave of uncertainty. तो यहाँ पर होगा the sudden economic downturn ignited, ignited a wave of uncertainty among investors and business owners. Okay. चलो, क्वेश्चंस 12 to 16 क्या कह रहा है. रीड ईच सेंटेंस, read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part. Okay. अब देखो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The error will be in, if any, will be in one part. कभी कभी एग्जाम्स में टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स ऐसे भी आ सकते हैं. Hence I said, or hence I believe that every student should be reading the directions carefully. So the error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation. Punctuation errors को हमें ignore करना. चलो जी, ठीक. In the pond, the small guppy flapped. So in the pond, the, ये तो सही है.
इन द पॉन्ड द स्मॉल गपी, ना गपी इज अ फिश, गपी का मतलब क्या होता है, गपी इज नथिंग बट अ फिश। इन द पॉन्ड द स्मॉल गपी फ्लैप्ड हिज टेल फिन बैक एंड फोर्थ टू स्विम नेक्स्ट टू द बिगर फिश। ओके फाइन, तो ये फिश है, यहाँ पर हिज टेल फिन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर गपी जो है वो फिश है और इसका जो जेंडर है वो इट इज नॉट डिटरमाइंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिज टेल फिन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था इट्स टेल फिन। हेंस बी में एरर है। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज बी फॉर बॉम्बे। फिर भी चेक करते हैं आगे कुछ है क्या। इन द पॉन्ड द स्मॉल गपी फ्लैप इट्स टेल फिन बैक एंड फोर्थ टू स्विम नेक्स्ट टू द बिगर फिश। ठीक, yes, correct answer for 12, question number 12 is B for Bombay. Next one, since the police since the police has not okay, since the police has not given a statement, the reporter can only make a conjecture about the crisis. Since the police has not, अब the police ये जो है यहाँ पर it is used as a plural noun, it is a plural noun, तो यहाँ पर has नहीं, we need have. Since the police have not given a statement, तो part A में error है, very simple, ठीक है। प्लूरल नाउन है, पुलिस जो है यहाँ पर इट इज यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, सो प्लूरल नाउन विल बी हैविंग अ प्लूरल वर्ब, यस और नो। प्लूरल नाउन विल बी हैविंग अ प्लूरल वर्ब, हैज की जगह हैव आना चाहिए। सिंस द पुलिस हैव नॉट गिवन अ स्टेटमेंट येट, द रिपोर्टर कैन ओनली मेक ए कंजक्चर अबाउट द क्राइसिस। चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। An oculist is a medical professional who specializes in diseases associated for the eyes. Okay, very simple. This is coming from the error topic prepositions. An oculist, oculist मतलब क्या? A medical professional who specializes in diseases associated for the eyes. अब for the eyes नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर for गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था with. देखो ये preposition error टॉपिक से आ रहा है। Associate या connect, ये जो शब्द है इनके साथ जुड़ जाता है आपका प्रपोजिशन विथ, ठीक है, याद रखना ये। सो एसोसिएटेड फॉर द आइज नहीं, एसोसिएटेड विद द आइज। सो ऑप्शन पार्ट डी में एरर है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The investor sold all of his stocks after having a premonition about the market crashes. The investor sold all, investor sold past tense में चल रहा है, the investor sold all of his stocks after having uh, so after having, okay, a premonition. Premonition is a knowledge, or we can say uh, prediction of something unpleasant is going to happen. कुछ बुरा होने का जो एहसास होता है, एहसास नहीं, एक व्हाट वी कैन से, कि लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, देन इन सच केसेस वी कॉल दैट थिंग एज प्रिमोनिशन। सो प्रिमोनिशन अबाउट द मार्केट क्रैशेस, यहाँ पर मार्केट क्रैशेस, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, मार्केट क्रैशेस नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था मार्केट क्रैशिंग। वी नीड टू हैव अ जेरेंड ओवर हियर, आईएनजी फॉर्म वाला चाहिए। सो द इन्वेस्टर सोल्ड ऑल ऑफ हिज स्टॉक्स आफ्टर हैविंग अ प्रिमोनिशन अबाउट द मार्केट crashing. So error is again in part D. Hence answer is option D. चलो, अब मार्केट क्रैशेस मतलब क्या कि when मतलब मार्केट क्रैशेस again will be a simple present tense, and simple present tense is generally used for things that happen repeatedly or habitual actions. तो मार्केट क्रैशेस जो है वो एक हैबिचुअल एक्शन ही है, तो यहाँ पर मार्केट क्रैशेस जो है वो हैबिचुअल एक्शन की तरह हो जाएगा, which in this context is wrong. इंस्टेड ऑफ क्रैशेस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पर हमें यहाँ पर एक आईएनजी फॉर्म वर्ब, एक जेरन की जरूरत थी, इसलिए हमने क्रैशेस की जगह पर क्रैशिंग लिख दिया, ठीक है। पार्ट डी में एरर है। कोई भी आपको डाउट होगा, कोई भी आपको अगर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि ये टॉपिक कवर करो या वो टॉपिक कवर किया जाए, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, आई कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक।
Let's go to the next question. Last question for the day. If logical minds do not prevail, if logical minds do not prevail, a major war will break out between the two largest gangs in the city. Okay. If logical minds do not, if logical minds do not, plural है, do not है, part A is correct. If logical minds do not prevail, a major war will, ठीक है, a major war will break, okay, ये भी सही है, B सही है, will break out between यूज किया है, मतलब दो लोगों को चाहिए, large, two largest gangs, okay fine, two largest gangs है, between भी सही है, part C सही है. So if logical points do not prevail, a major wall will break out between the two largest gangs in the city. Okay, largest gangs in the city. So part D is also correct. So part A, B, C, D, all of them are correct. So answer will be no error. So question number 16, the answer is E for England, no error. So आज के वीडियो में इतना ही. So we have covered 16 questions in part 1 of IBPS Clerk Prelims 2023. इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा मैं, जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल के 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे.